ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गोपाल कवचम। प्रिय भक्तों, गोपाल कवच का उल्लेख नारद पंचरात्र में मिलता है। इसे भगवान शिव ने देवी पार्वती को सुनाया था। गोपाल कवच एक दिव्य और परम अद्भुत कवच है। इस कवच का पाठ करने वाले की सुरक्षा स्वयं इस सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, वही इस सृष्टि का पालन और रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्मरण मात्र करने से मनुष्य अपने जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य और परम अद्भुत गोपाल कवच स्तोत्र का जो भी व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान लगा करके पाठ करता है या इसे श्रवण करता है, उसकी शत्रु जनित विपत्तियां शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं और उस व्यक्ति का जीवन भगवान श्री कृष्ण के हाथों में उसके जीवन की डोर पहुंच जाती है और जिसके रक्षक भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं ना, उसका कोई भी व्यक्ति बाल बांका नहीं कर सकता। इस कवच के बिना भगवान श्री गोपाल की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा यह कवच सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कराने वाला है। आइए भगवान श्री कृष्ण की शरणागति को ग्रहण करते हुए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस पावन कवच को श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ में श्रवण करते हैं। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री महादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शरणं देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुवुदाहृतं। देवतावालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः। शिरो मे वालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति। नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं। नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः। जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा। ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः। हृदयं गोपिकानाथो नाविंसेतु प्रदः सदा। हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु। कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः। लिङ्गं पातु गदापाणिर्वालक्रीडा मनोरमः। जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम्। उत्तरं कैटभारश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः। आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः। वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशन्यां गोपीनन्दनः। ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दना। शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः। शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे पाम्पतिः। भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु। गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये। इति ते कथितं दिव्यं कवचं
परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः तस्यास्तु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जप होमार्चनादिकं ससत्यघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः शरणं देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोष्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुवुदाहृतं देवतावालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः शिरो मे वालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नावंसेतु प्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्वालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशन्यां गोपीनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दना शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रयतो नरः तस्यास्तु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जप होमार्चनादिकं ससत्यघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः शरणं देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोष्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुवुदाहृतं देवतावालकृष्णश्च
चतुर्वर्गप्रदायकः शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशन्यां गोपीनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दना शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रियतो नरः तस्यासु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं ससत्यघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः शरणु देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोष्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुवुदाहृतं देवताबालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशन्यां गोपीनन्दनः
ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारे रथः कैटभमर्दना शयानं पातु भूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रत भावे पांपतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वांग संधिषु गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रियतो नरः तस्यास्तु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जप होमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शरणं देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोष्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुवुदाहृतं देवतावालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नावंसेतु प्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्वालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशन्यां गोपीनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारे रथः कैटभमर्दना शयानं पातु भूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रत भावे पांपतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वांग संधिषु गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रियतो नरः तस्यास्तु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जप होमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः।
श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शरणं देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोष्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुवुदाहृतं देवतावालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः शिरो मे वालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नावंसेतु प्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्वालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशन्यां गोपीनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दना शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रियतो नरः तस्यास्तु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शरणं देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोष्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुवुदाहृतं देवतावालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः शिरो मे वालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नावंसेतु प्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं
पातु गदापाणिर्बालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशान्यां गोपीनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दना शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रत भावे पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रियतो नरः तस्यास्तु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः शरणं देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोष्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुवुदाहृतं देवतावालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः शिरो मे वालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्बालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशान्यां गोपीनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दना शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रत भावे पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रियतो नरः तस्यास्तु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं
प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा य पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जप होमार्चनादिकं ससत्यघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शरणं देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोष्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुवुदाहृतं देवतावालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः शिरो मे वालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नाभिं सेतुप्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्वालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारिश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशन्यां गोपीनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारिरथः कैटभमर्दना शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रियतो नरः तस्यास्तु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जप होमार्चनादिकं ससत्यघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शरणं देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोष्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुवुदाहृतं देवतावालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः शिरो मे वालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु
चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नावंसेतु प्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्वालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशन्यां गोपीनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दना शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे पाम्पतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रियतो नरः तस्यासु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठे शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जपहोमार्चनादिकं सशस्त्रघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः शरणो देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोऽस्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुवुदाहृतं देवतावालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः शिरो मे बालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नावंसेतु प्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्वालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशन्यां गोपीनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दना शयानं पातु पूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे
जाग्रत भावे पांपतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वांगसन्धिषु गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रियतो नरः तस्यास्तु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जप होमार्चनादिकं ससत्यघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः। श्रीमहादेव उवाच अथ वक्ष्यामि कवचं गोपालस्य जगद्गुरोः यस्य स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः। शरणु देवी प्रवक्ष्यामि सावधानावधारय नारदोष्य ऋषिर्देवी छन्दोनुष्टुभुदाहृतं देवतावालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायकः शिरो मे वालकृष्णश्च पातु नित्यं मम श्रुति नारायणः पातु कण्ठं गोपीवन्द्यः कपोलकं नासिके मधुहा पातु चक्षुषी नन्दनन्दनः जनार्दनः पातु दन्ता अधरं माधवस्तथा ऊर्ध्वोष्ठं पातु वाराहश्चिबुकं केशिसूदनः हृदयं गोपिकानाथो नाविंसेतु प्रदः सदा हस्तौ गोवर्धनधरः पादौ पीताम्बरोऽवतु कराङ्गुलिः श्रीधरो मे पादाङ्गुल्यः कृपामयः लिङ्गं पातु गदापाणिर्वालक्रीडा मनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीरामोऽवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटभारश्च दक्षिणं हनुमत्प्रभुः आग्नेयां पातु गोविन्दो नैऋत्यां पातु केशवः वायव्यां पातु दैत्यारी ऐशन्यां गोपीनन्दनः ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारी रथः कैटभमर्दना शयानं पातु भूतात्मा गतौ पातु श्रियः पतिः शेषः पातु निरालम्बे जाग्रद्भावे पांपतिः भोजने केशिहा पातु कृष्णः सर्वांगसन्धिषु गणनासु निशानाथो देवानाथो दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतं यः पठे नित्यमेवेदं कवचं प्रियतो नरः तस्यास्तु विपदो देवी नश्यन्ति रिपुसन्धतः अन्ते गोपालचरणं प्राप्नोति परमेश्वरी त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा यः पठेत् शृणुयादपि तं सर्वदा रमानाथः पारिपाति चतुर्भुजः अज्ञात्वा कवचं देवी गोपालं पूजयेद्यदि सर्वतस्य वृथा देवी जप होमार्चनादिकं ससत्यघातं सम्प्राप्य मृत्युमेति न संशयः।